Hello everyone, welcome to Amit-E Universe, and today our topic is introduction or how to introduce yourself. Now before I'll tell you how to introduce yourself, let me give a brief introduction of my own. My name is Amit Chaturvedi, a soft skill trainer, a motivational speaker and an assistant professor in English with almost 10 years of experience, including corporates and educational institutions. Now getting back to the topic, we were supposed to discuss about introduction. While Googling it, I discovered two of the words being bifurcated from the same word, introduce. Now intro means beginning or the opening, and deuce is to be a leader. Now when you open yourself, when you begin yourself, you become a leader or a loser. Now, how will you become a leader when you are introducing yourself? Again, one question. Many of you must not be very comfortable with English, so I'll be involving both English and Hindi in this particular session of mine. Right? So, हम ये बात कर रहे हैं कि हमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है. अब आप ये ना बोले कि सर आपने हम बोला. मैंने इसलिए बोला because I am involving everybody of you sitting over there and myself when I am beginning to introduce the session and take your introduction and my introduction into some finishing outlook. Now, introduction is something which begins with the 6 sigma. That is the property of knowing who you are, what happened in your life and what you are doing at the moment. When did it take place? Of course, where did it take place? Why did it happen? And how did it happen? Now, how is 1H and 5W? Now, how is something which we are going to discuss today. But before that, you need to know who, what, when, where, and why. And that is your own intellectual property. That is something which you already know. You just need to bring it into the teaching or the learning I'm going to give you today. Now, before we begin the introduction, I need to tell you something about communication. Now, communication, everybody of you know about communication. Someone will give me an explanation or a definition is something like telling about oneself to anyone is communication, or communication is the exchange of idea. But if you'll go in depth with the process of communication, you'll come to know that communication is a very, very wide topic to discuss. Communication is there with everything around us. The fan communicates, the screen is communicating, my tie is communicating, this particular collar of my shirt is communicating, my coat is communicating. तो हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है वो किसी ना किसी माध्यम से हमसे संचार करती है. Now if I'll be taking the example in this particular summer season, अगर हम summer season में example ले तो हमारे सर के ऊपर एक मशीन चल रही है अभी जिसे हम पंखा कहते हैं. Now इस पंखे से आप कम्युनिकेट करते हैं या ये पंखा आपसे कम्युनिकेट करता है? Have you ever thought about it? करता है. अब देखिए मेरे घर का पंखा क्या कह रहा है. मुझे मेरे घर का पंखा कह रहा है I am of Havells brand. I have 3 blades. I am coffee in color. I use the electrical and the potential energy to convert it into kinetic energy and move and give you comfort during summer season. ये पंखा कह रहा है मैं एक पंखा हूँ, मैं हेवेल्स ब्रांड का हूँ, मेरे 3 डैने हैं, मैं कॉफ़ी रंग का हूँ, मैं घूमता हूँ और क्षितिज और विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके इसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता हूँ. Now, this is how things communicate. Now, when non-living things are communicating without brains, you all smart, effective people
need to know that you need to express yourself in best of the manner so that the listener must get impressed with you. Now coming to the communication again, communication starts with the sender, then comes the message, then the media, then the receiver, and ultimately comes the feedback. अभी जो मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी, अभी मैं कौन हूँ? Right now I am the वक्ता और the sender. जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, that is my message, मेरा संदेश जिस माध्यम से बता रहा हूँ, ये जो वीडियो है या मेरी आवाज जो आप तक पहुंच रही है या मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन पहुंच रहा है, everything is the media. Everybody listening out there in front of me, all are the receivers, and ultimately if you like my video, definitely I'll be getting more of the comments, more of the likes, and again you'll be demanding more from my end. That is the feedback. It can be the positive or negative. So we can say that introduction means telling about oneself in such a manner that all the required information is delivered to the listener, generating a positive feedback. What do you introduce yourself for? What do you communicate yourself for? You communicate yourself for, you introduce yourself for getting a feedback, and that's too a positive one. Now, let's begin the positive introduction, or let's begin the introduction which will give you a positive feedback. Coming down to the 9 essential or 9 important things to be kept in mind when you are introducing yourself. As you can see in the screen, there are 9 important factors to be spoken, to be written, all together in the chronological manner when you are introducing yourself. Now, people will start Googling it, people will find videos on YouTube and different ways of introducing yourself. This is the introduction which you'll not find in any book, which you'll not find in Google. This is something which I have accomplished with the 10 years of experience I have. By the time I have given almost 150 plus interviews just to check whether I'm perfect in introducing myself or not. My purpose was not joining the job. Of course, I've gone for even the interviews of aeronautical engineering carrying a wrong information, and although it's a crime, I know, but it was just for checking myself so that I can be the best when I'm delivering myself to my students. अब हम बात करते हैं ये 9 जो important factors हैं, कौन कौन से हैं. पहला मैंने बोला नाम, दूसरा आप कहाँ से हो, तीसरा आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, चौथा आपका व्यवसायिक विवरण क्या है, पांचवा आपकी खूबियां, दैट इज योर स्ट्रेंथ, छठा आपकी कमी, ऑफ कोर्स आई विल कम टू योर वीकनेसेस. बहुत सारे लोगों का सवाल होता है सर व्हाई वीकनेसेस. देन कम्स द गोल इन लाइफ, देन द हॉबीज, एंड देन द मोटो ऑफ लाइफ. These 9 things are supposed to be introduced. I'll be getting back to the slide, but before that, let's move to the next slide. The next slide says that erase and evolve. And before we start to discuss this, I would request everybody of you to just be ready with your notebook and a pen in your hand so that you skip none of the informations. Now show a bit of patience. If you want to learn something unique, if you want to really enhance your personality, you'll have to develop that perseverance and patience in you. That is one of the important and integral part of the personality. तो जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, आपके अंदर सूझबूझ नहीं आएगी, और जब तक सूझबूझ नहीं आएगी चीजें समझ में नहीं आएंगी, और नहीं समझ में आएंगी तो कभी वो दिमाग में भी नहीं आएगा. प्लीज कंसंट्रेट एंड शो अ बिट ऑफ पेशेंस. नाउ डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें. मैंने क्या बोला था कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, यू नीड टू कीप इन माइंड दैट यू नीड टू जनरेट अ पॉजिटिव फीडबैक. तो पॉजिटिव फीडबैक कैसे आएगा? जब आपको मालूम होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट शुडंट बी डन, व्हाट मस्ट नॉट बी डन. नाउ
what I'll be covering in this particular thing is, हम लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं that CBSE का लड़का है, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, ICSE बोर्ड में बड़ी अच्छी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, झारखंड बोर्ड वाले थोड़े डर जाते हैं, या उड़ीसा बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले, they get a little threatened कि इनको बड़ी फाई फाई अंग्रेजी आती है. बट द फैक्ट इज दैट्स नॉट द इंग्लिश दे आर स्पीकिंग, दैट्स द जनरल कम्युनिकेशन दे आर डूइंग, वेयर आई कैन फाइंड थाउजेंड्स ऑफ मिस्टेक. सो डोंट वरी, आप भी अगर कोशिश करेंगे थोड़ी, मैं आगे की वीडियोस जब डालूंगा तो आई विल बी डिटेलिंग यू अ लॉट अबाउट मेकिंग इंग्लिश इजी, और कैसे आप डे टू डे लाइफ में इंग्लिश को यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी फ्लुएंसी बढ़ा सकते हैं, नो मैटर व्हाट बोर्ड यू बिलोंग टू. एनीवेज, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, इसमें क्या क्या पोर्शंस मैं कवर करने वाला हूं. मैं आपको बताने वाला हूं डूज एंड डोंट्स, बताते हुए कि आप ग्रामर में क्या मिस्टेक करते आ रहे थे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए. कम्युनिकेटिव इंग्लिश में इंट्रोडक्शन को कैसे फास्ट, पेसी और फ्लैश में खत्म करने वाला और बिल्कुल इम्पैक्ट मेकिंग, बिल्कुल इम्प्रेसिव बनाने का ये जो फॉर्मूला है वो मैं डिकोड करूंगा, और ऑफ कोर्स आपकी कॉमन सेंस पर थोड़ा सा काम करूंगा. सो बी अ लिटिल पेशेंट and we'll start with the introduction. Now again I'm going back to the slide. Number 1, name. नाम बताते समय क्या करें और क्या ना करें. What should be done when you are telling your name and what you shouldn't do. क्या करें क्या ना करें, बड़ी मुश्किल है. Anyways, name. सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखना है अपने नाम को बोलते समय, नेवर यूज माई सेल्फ और दिस इज बिफोर योर नेम. नोट इट डाउन प्लीज, स्टार्ट राइटिंग. माई सेल्फ, दिस इज साउंड्स वेरी स्टाइलिश, इजंट इट. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो अपने आप को बहुत बड़ा अंग्रेज समझते हैं. I've worked with the best private universities across the country. I've seen this particular problem occurring. बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, बड़ी स्टाइल से बोलते हैं, हेलो सर, माई सेल्फ दिस एंड दिस. नाउ सब बताते हैं कि माई सेल्फ बोलना नहीं चाहिए. क्यों नहीं बोलना चाहिए? आई विल बी कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट. ग्रामर, आई सेड आई विल बी डिस्कसिंग अ बिट ऑफ ग्रामर ऑल्सो. माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हिंदी में कहते हैं परावर्तिक सर्वनाम, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का परावर्तन करने वाले सर्वनाम को परावर्तिक सर्वनाम कहते हैं. सो एनीथिंग, any pronoun which reflects the action done by the doer is called reflexive pronoun. अगर अपने आप को आपको देखना है तो आप क्या करेंगे? आप आईने के सामने जाएंगे और तभी आप नजर आएंगे जब आप आईने के सामने खड़े होंगे. सो इसी तरीके से ये प्रोनाउन है, ये तभी नजर आता है जब इसके सामने इसका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट या ओरिजिनल सब्जेक्ट खड़ा हो. तो जैसे माई सेल्फ एक शब्द है, ये हमेशा I के बाद आएगा. I is the main body, myself is the reflection. They, themselves. We, ourselves. We cooked our food ourselves. I did my homework myself. I myself did my homework. In all these sentences you see, myself I के बाद आ रहा है, themselves they के बाद आ रहा है, ourselves we के बाद आ रहा है, yourself यू के बाद आ रहा है. सो माइंड इट, सेंटेंस की शुरुआत में माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ नहीं आ सकता. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर इट इज इनकरेक्ट. सो नेवर यूज माई सेल्फ बिफोर योर नेम. दिस is into stylish pattern nowadays. Many celebrities use it and many of the YouTubers use it. Many of the people around you use it, but please avoid it unless you are something to be objectified. I'll correct your senses if you'll comment me and ask me more details about it. Now, नाम बोलते समय दूसरी चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, आपको अपने नाम का मतलब हमेशा से मालूम होना चाहिए. यू मस्ट रिमेंबर द मीनिंग ऑफ योर नेम. दैट इज अ कंपल्शन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू फॉरगेट द मीनिंग ऑफ योर नेम, इट मे बी आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यूज कि आपका नाम बड़ा यूनिक लग रहा है, इसका मतलब बताइए. इफ यू फेल टू गिव द मीनिंग, दे वुड से दैट यू आर जीरो विद योर सेल्फ अवेयरनेस. Third point, again very very important to remember, is always speak your full name. Do not abbreviate or shorten your name. This is not a right thing to do, especially when you are introducing yourself to a senior and you need to manage your mannerism and protocol at the same time. When you speak your name, be very crisp and clear. In the start of the introduction, I gave you my name. My name is Amit Chaturvedi. For a repetition, I am telling you, it will penetrate your ears.
नाम बोलते समय इतना कॉन्फिडेंस दिखाइए कि लोगों को लगे कि आपको अपने नाम से प्यार है. यू लव योर सेल्फ, देन द वर्ल्ड विल लव यू. अपने से प्यार करो तब दुनिया प्यार करेगी, और अपने से प्यार करना है तो सबसे पहले अपने नाम से प्यार करो. नंबर 2, नेटिव प्लेस. अरे अभी हम लोग शक्तिमान देखते हैं, आने लगा है दोबारा चैनल में. ओ, गंगाधर का रोल मुझे बड़ा पसंद है. वाई? तो जैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, पंडित गंगाधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री, ग्राम कुटिंडा, पोस्ट त्रिकोली. आप ग्राम और पोस्ट मत बताइएगा जब आप अपने नेटिव प्लेस के बारे में बता रहे हैं. बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. स्पीक अबाउट द प्लेस वेयर यू बिलोंग टू. यूज द प्रिपोजिशंस इन एंड at. In is used for the larger place, at is used for a smaller place or more specific places. Like right now I am in Ranchi, I must be saying that I live at Ranchi in Jharkhand. Again, if I'll go and give my interview in some foreign country, I'd be saying I live at Jharkhand in India, right? So be very place specific, use in and at in a proper manner. Now coming down to educational qualification. Educational qualification कैसे बताते हैं? See, I am taking it on a fast track. अगर मैं इसको अच्छे से समझाने लगूँ तो introduction is going to take almost 5 to 6 classes for you. So if I'm winding it up in one class, that is certain informations are still missing. So you can comment me anytime and ask more details about it if you are confused somewhere. I'm there to clear your doubts. Now, educational qualification. What you need to speak is your qualification, that is matriculation, intermediate, graduation and post-graduation. Please avoid using 10th, 10 plus 2, matric, inter. I don't know from where did you learn these words, but please, they are not the terms to be used for qualification. Although they are used in abbreviated forms, in governmental openings, many ways, but they are to be written so that they can occupy least of the space on the paper. कम जगह लेंगे, इसलिए उनका इस्तेमाल कर लेते हैं. Otherwise, they also know कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. Again, there are names of the colleges जहाँ पर यूज होता है, महिला इंटर कॉलेज एंड ऑल दैट. सो वहाँ पर भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे. यू विल बी अवॉइडिंग यूजिंग इंटर, मैट्रिक, 10+2 और 10th when you are speaking your qualification. Use matriculation, intermediate, graduation and post-graduation. When you speak about your qualification, start with the qualification acquired, name of the school, college, university and ultimately the year of passing. It can be chronological, it can be anti-chronological depending on the kind of appearance you are giving or kind of introduction or the audience you are in front of. Now, professional profile. Professional profile is again something very, very important when you are introducing yourself. Of course, it includes the work experience, is going to include every other qualification which you have acquired apart from the educational qualification which a general person acquires. तो वो qualifications जो आने वाले समय में आपके जॉब में आपको हेल्प करेगी, that is generally called the professional qualification. व्यवसायिक योग्यता, व्यवसायिक विवरण, anything which is going to help you with your job. So any certification which you have taken, any diploma which you have acquired or kind of on job training you have done, internships, the projects. So be very, very specific about doing your projects in the school and the colleges and keep a file of it and pile a record out of it so that you can use it as a reference when you are going for a job. Especially when people call you a fresher, you need to tell them that of course I'm a fresher at job, but I have all the experiences which is required during the job. Now coming down to your strength. A lot of people have this particular problem of speaking about their strengths. Strength के बारे में बोले तो बोले क्या और क्या ना बोले, right? The main problem, the main issue is understanding why to speak strength and why not to speak a strength which is actually not your strength. In many of the interviews, generally जब interviewers बैठे होते हैं मोटे मोटे चश्मे लगा करके, they have in-depth experience with them. They have 20, 25 years, 30 years of experience and they know that what you are up to, right?
तो उनके सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अमित सर ने बोल दिया कि कुछ स्ट्रेंथ्स बताने हैं और मैंने आपको लिस्ट दे दी, उसमें से आपने 4 सेलेक्ट करके बोल दिया। नो, डोंट डू दैट। व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ, बी वेरी स्पेसिफिक। ध्यान में आपको रखना है कि उन्हीं स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करना है विच एक्चुअली इज देयर इन योर पर्सनैलिटी। लाइक when I say the list of strengths, diplomacy, workaholism, self-confidence, kind of visionariness, and other strengths. So when you speak about your strength, be very specific that the interviewer may ask you that, give me an instance of your life which proves that you are this in nature. You're workaholic in nature, you're confident in nature, you are visionary in nature, you are creative in nature, you are innovative in nature, or you are this and that. So you need to be very prepared to select some of the strength which is actually there in your personality. At the same time, this is an obvious question during interviews, that why should I select you for this job? Remember that when this question comes, the interviewer is interested in asking about your strengths. Now weaknesses. Weakness एक ऐसी चीज़ है, मैं भी शुरुआत में जब बहुत ज़्यादा यंग था और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, मेरे दिमाग में ये बातें आती थी कि why should I be speaking about my weakness to anybody? Who the hell is he to know about my weaknesses? And I used to tell many of the interviewers that I don't think I have any weakness in me. बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, वीकनेस बताना पड़ेगा। ओके, तो ये वीकनेस क्यों बताना पड़ेगा? मुझे इंटरव्यूअर्स ने बहुत सारे सवाल पूछे। मैं शुरुआत में कहता था आई डोंट हैव एनी वीकनेस। इन वन ऑफ द इंटरव्यूज, इंटरव्यूअर स्टूड अप एंड ही सेड, okay sir, sit here and take my interview. And that was the first day जब मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, and I said to the interviewer that, sir, how come I can take your interview? Then he made me realize that you are not able to take my interview, that you possess, and that says that you possess some of the weaknesses. And nobody is perfect in this world. आमिर खान के चच्चा सारे तो हो नहीं सकते. Anyways, weakness तो बताना है. अब मैं आगे के इंटरव्यूज में गया, मेरे दिमाग में था कि नहीं, नाउ आई विल बी गिविंग माय वीकनेसेस. सो इन माय फर्स्ट इंटरव्यू आई सेड इट टू द इंटरव्यूअर दैट सर, माय वीकनेस इज आई टेंड टू गेट एंग्री एट टाइम्स. इंटरव्यूअर ने बोला, अच्छा बेटा, किसी दिन मेरे पे गुस्सा आ गया तो तू टेबल चेयर उठा के मेरे ही सर पे दे मारेगा. एंड आई वाज थ्रोन आउट ऑफ द इंटरव्यू. In the next interview, they asked me the same question. I said, sir, I tend to get emotional at times. उन्होंने बोला, कौन सा टीवी सीरियल देखता है बेटा, इतना इमोशनल हो गया? Again, I was rejected. So, I thought about it a lot. एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, जान तो बचाना है ना भाई. Then I realized that I'll have to really speak about my weaknesses in a diplomatic manner. फिर मैंने बोला, शकुनी मामा की जय. And then I started speaking about my weaknesses in a very smart, cultivative manner where I actually presented my strengths. Like, I tend to get restless without work. When I don't have anything to do, I get restless. Now, actually, I'm using the word restless, but at the same time, I'm showing that I'm workaholic in nature. Again, I lose my patience when something is not perfectly done. That means you want to show that you are not impatient, but you are rather a perfectionist. I delay a particular project because I want to do it in a perfect manner. Again, you are not somebody who delays it, but one who believes in doing a project perfectly. Now, a lot more is to be detailed. If you want the list of weaknesses, again, you can put a comment on the comment box. Then moving down to goal in life. This is very interesting. लोगों से पूछता हूँ, what is your goal in life? I want to be a successful person. Now, how come you'll be a successful person? Successful बनना है, right? I want to serve my country. I want to serve my family. I want to be somebody very renowned. All rubbish answers.
Please, that's not your goal in life, right? Now, you are being very patient listening to me for last almost half an hour. Again, at the same time, you sit in your classes for hours and hours to study, to garner something, to gain something from the faculties. That's a real tough task which you are doing for almost 15, 16, 18 years, 20 years, 25 years for now. So why are you doing all these things? It's real hard nut to crack. It's real tough task. So why are you doing this? You are doing this just to achieve your goal. Be very relevant and realist to the interviewer or to any person who is listening to you. Say आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में. That is actually going to be your goal in life. When people ask me what's your goal in life, I say बहुत सारा पैसा, समाज में पहचान, और बहुत 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 ज़्यादा फैमिली में प्यार, और कंपनी में एक अच्छा पोजीशन. ये चाहिए, रियलिटी है. आई नीड मनी एंड कंफर्ट. रिमेंबर, पॉइंट नंबर 1, मनी एंड कंफर्ट ऑफ लाइफ. पॉइंट नंबर 2 is reputation in the society, and final point is designation in a company. And that is why I never preferred a sarkari job, because it has a hierarchy which starts from a very low backup to the higher one. So reaching the higher one will take a lot of time. If I am a private university faculty, and even if I plan an entrepreneurship tomorrow, I'll be my boss. I'm still my boss. I do not listen to the instructions. And don't be like me, of course. Don't ever try to be like me, because otherwise you'll become a job hooper rather. Anyways, goal in life, number 1, money and comfort of life. Number 2, reputation in the society. And number 3, designation in the company. So when somebody asks you that what is your goal in life, so I want to be the HR manager in a reputed firm, earning a lot of money, having all the comforts of life, and having reputation in the society. So you have spoken about all 3 things, and that is something which will impress the interviewer more rather than anything else, which is of course constructed. People don't serve the nation without a penny in the pocket. Anyways, now coming down to your hobbies. Hobbies. I've seen many of the HRs not being even parallel to your knowledge or kind of dynamic personality you have. I have been to many interviews where the HR were threatened of me, or sometimes even the CEOs were threatened with me with the kind of presence and confidence I illustrated in front. So they could not catch me with anything, because I know that what to do with name, what not to do with name, what to do with native place, what not to do with native place. So this is the area, hobby is the area where anybody could catch you and बोलते हैं ना, धोबी पछाड़ लगा सकता है अगर उसको मन है कि आपको सेलेक्ट नहीं करना है. और सेलेक्ट नहीं करने का मन, भैया इंडिया में रह रहे हो तो समझ के चलो इस बात को, है ना. पाठक जी हैं और चौबे जी इंटरव्यू देने के लिए आएंगे तो डेफिनेटली प्रेफरेंस देंगे, फिर बाहर यादव जी खड़े होंगे तो उनको नहीं देंगे. So remember, anything can practically run in the mind of the interviewer. Sometimes it happens that the way you entered, the way you said was arrogant, and interviewer didn't like it, although it was not intentional. तो कई बार इंटरव्यूअर दिमाग में बना लेता है कि इसको सेलेक्ट नहीं करना है, बट टू रिजेक्ट यू ही नीड्स अ रीजन, एंड हॉबीज गिव्स दैट पर्टिकुलर रीजन टू द इंटरव्यूअर. अब ऐसा कैसे होता है मैं समझाता हूँ आपको, बड़े शॉर्टली ब्रीफली समझाता हूँ, ठीक है. If you go to the interview and if you say, sir, I love listening to music, they'll ask you about the types of music, from where the music was innovated, tell me something about the musical instruments, right? And most of the time, nobody, even the best musician in the world, would not be able to detail about all musical instruments or the kind of music, right? If I'll ask you what kind of a music you like, sir, romantic music. So that's not the music, my dear. So don't get into something which you cannot answer. Sir, I love gardening. क्या करते हैं गार्डनिंग में? सर फूल में पानी देते हैं.
So that's not gardening. Gardening, if you'll say gardening in front of the interviewer, the interviewer may ask you, what do you mean by threshing? What do you mean by bonsaiing? What is pesticiding, insecticiding? A lot of questions will come up which you'll never be able to answer. Again, in one of the interviews, I said it to the interviewer, although I rectified immediately. I said to the interviewer that I love cooking. So what do you love to cook? Continental, Thai, Chinese, Mughalai, odofs, appetizers. What do you love to cook? मैं तो पागल हो गया भाई. I don't know how to cook anything. So same happens in the rectification. I said that I love cooking in my own kitchen. So they asked me, what do you cook by your own? I said I cook Maggie. Ask me how to cook Maggie. So tear the wrapper, add the noodles into water, add the spices in the packet, stir it for 2 minutes, and your Maggie is ready. So it is one of the easy thing to do. लेकिन अगर डोसा बनाने बोल देगा इंटरव्यूअर, तो आप जितने देर में डोसा बनाओगे उसके 10 गुना ज़्यादा समय में भी डोसा बनाने का प्रोसेस नहीं बता पाओगे. क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में नहीं आएगा कि तवे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, चावल की पेस्ट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दम आलू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं. सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल कम. डू नॉट स्पीक अबाउट द हॉबीज विच यू एक्चुअली डोंट cultivate in yourself or which you say for the sake of saying. कुछ ऐसी हॉबीज बताइए जहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे सवाल ही ना पूछ पाए. And again, I'm reminding you, this introduction is based on the sheer experience of different interviews I've given throughout my career. Now, hobbies में बोले तो बोले क्या? Sir, I love playing with kids. Think of a question and throw it back to me in the comments. There will be no possible question other than only one question which will come up. Why do you love playing with kids? I love playing with kids because it gives me rejuvenation, refreshment, and a kind of refreshment after a long hard work I have done all day long. So ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है जहाँ पर आप रैप हो जाए. आप बोल सकते हैं सर आई लव वर्शिपिंग, और यू कैन इवन से आई लव डिस्कसिंग एनी टॉपिक विद माय फ्रेंड्स, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू बी मोर इंटरैक्टिव एंड स्पेंड मोर टाइम विद द इंटरव्यूअर. अब वो पूछेगा आपसे कि आप क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम अपने दोस्तों के साथ बैठ करके. सो यू हैव अ लॉट टू स्पीक अबाउट द टॉपिक विच इज ऑफ कोर्स द बेस्ट ऑफ योर्स, or which you are really aware about or knowledgeable about. So be very specific about hobbies. Now, last but not the least is the motto of life. मैंने इंट्रोडक्शन की शुरुआत में बोला था फर्स्ट इंप्रेशन इज द एवरलास्टिंग इंप्रेशन. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दैट वन दैट एंड्स वेल इज ऑलवेज वेल. हिंदी में कहते हैं अंत भला तो सब भला. अब ये अंत आपका कैसे अच्छा होगा, अंत की बात कर रहे हैं तो हम भी आ जाते हैं अपनी आखिरी स्लाइड पे. मोटो ऑफ लाइफ. व्हाट डू यू मीन बाय मोटो ऑफ लाइफ? Motto of life, people get confused between motto of life and goal in life. What is motto of life? Motto of life means an idea which can change your life. आपके जीवन का ध्येय, वो सोच जो आपकी जिंदगी बदल सकता है. In some of my previous videos you must have gone through my motto of life. Anyways, I'll be repeating it for you and will be telling you that how come you can speak about your motto of life. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अंत भला तो सब भला. कई बार ऐसा होता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं बनता है, और डेफिनेटली आप कभी कोई वीडियो बना करके देखना. अभी मेरा कॉन्फिडेंस देखो और ये मेरा पहला वीडियो है, मैं शुरुआत कैसे की थी उसमें देखना. आई एम द पर्सन हु फाइंड्स हिज ओन फ्लॉज. मुझे अपनी कमियां खुद खोजने में बड़ा मजा आता है. तो जैसे जैसे मैं आपके साथ इंटरैक्ट करते जा रहा हूँ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है. तो कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू में गए या कहीं पर भी बोलना शुरू किए तो थोड़ा सा आप डरे सहमे रहते हैं. बट एज यू गो हैड यू गेन दैट कॉन्फिडेंस, एंड व्हेन यू एंड, इफ यू एंड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, डेफिनेटली द इंटरव्यूअर विल बी impressed. Now, motto of life is the end of your introduction. So how to give your motto of life? Dhirubhai Ambani once said, "Kar lo duniya mutti mein." Today, everybody of us have a mobile phone in hand.
that is because of the virtues of Dhirubhai Ambani. Shahrukh Khan एक दिन ऐसे ही हाथ फैला करके बोल दिया that I'll rule this city one day. Now he's not ruling only Bombay or now called Mumbai, but is ruling the world as far as the Bollywood movies are concerned. So हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसी सोच होती है जो उसकी ज़िंदगी को बदल करके रख देता है. मेरे पर्सनल बैकग्राउंड और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में मैं ज़्यादा तो डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि आई एम अ सन ऑफ अ मदर हु यूज्ड टू वर्क एज अ home to home tutor, right? And we had a lot of struggle involved in our life, and I could not complete my education from best of the colleges and universities which I dreamt of. I've always been to a Hindi medium school and Hindi medium college, और आज मैं यहाँ पर हूँ. People appreciate me for being one of the best faculty for English. I have been one of the faculties who has got the best of the responses from all the universities I have taught in. 98% is the kind of feedback I have been getting in the universities in the past, and right now also I've got a lot of love from my students, and for that I thank them a lot. Anyways, तो मुझसे अगर पूछते हैं बच्चे, कई बार मैं करियर काउंसलिंग सेशन में जाता हूँ, मोटिवेशनल सेशंस में जाता हूँ, तो बच्चे पूछते हैं व्हाट हैज़ बीन योर ड्राइविंग फोर्स इन योर लाइफ. आपका क्या मोटो रहा है, आपकी क्या सोच रही है जिसने आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाया है. लेट मी टेल यू, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन दिल्ली एंड फर्दर आई वेंट टू देहरादून फॉर माई स्टडीज़. मैंने गोलगप्पे वाले के यहाँ भी काम किया और ठेले के नीचे भी सोया हूँ, और हफ्ते भर में मैंने उसके आलू मैश पोटैटोज जो लास्ट में उसके चोखे बच जाते थे उसको खा करके मैंने रात काटी है नाली के किनारे मच्छर से कटवाते हुए. आज तो लाइफ बहुत अच्छी है. तो अगर मैं वहाँ से यहाँ पहुँच पाया हूँ तो मेरे लाइफ में एक सोच रही है और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, और डेफिनेटली मैं बहुत आगे बढ़ूँगा. वन डे I'll make my family proud, I'll make my society proud of bearing me for so long. Of course, my better half, my partner will also be proud of me. My guardians will also be proud of me. My brother and sisters will also be proud of me. So what's that motto of life? What's that key of success for whatsoever I have achieved till date? I say to my students, and I'll say to you also, others have done it, I can do it, and I will do it. दूसरों ने इसे कर लिया है, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे करूँगा. If Amitabh Bachchan is the star of millennium, if Shah Rukh Khan is the star today, who is the star tomorrow? Me. My name is Amit Chaturvedi. अभी भी मौका है, ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा सब्सक्राइब करो, फॉलो करो. कल के डेट में अमित सर आपको याद रखे. Try your best to do your best, and that's something from where I am going to start myself and end this particular session. Smile. See you all. Stay happy, stay blessed. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you all.